Good morning, students. In continuation with chapter 3, current electricity, today's topic is combination of resistor. Let's start. Two or more resistors may be connected to each other in certain combination to produce an equivalent resistance of any desired value. The equivalent resistance R of a combination of resistors is defined as the resistance of a single resistor which can replace the combination without changing the voltage across the combination and the current I in the rest of the circuit. Now, combination of resistor. Two or more resistors may be connected to each other in a certain combination to produce an equivalent resistance of any desired value. Suppose ये combination of resistors है, some are in the series है, some are there in the parallel. तो यहाँ पे हमारे combination resistor या तो series में होते हैं या फिर parallel में रहते हैं. तो इस पूरे system का अगर हमें combined resistance निकालना है, there is a two method to calculate it. So one by one we're going to study how to calculate this. Now the equivalent resistance जो भी इनका combination का जो equivalent final resistance R आएगा is defined as the resistance of a single resistor which can replace the combination without changing the voltage. तो जो final R आएगा विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, तो कंडीशन क्या, हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो V आपको दे ही रखा है, तो वो चेंज नहीं होगा एंड द करंट I इन द रेस्ट ऑफ द सर्किट, और I भी जो जाएगा दैट विल नॉट गोइंग टू चेंज. इंटरनली समथिंग विल गोइंग टू बी चेंज, बट जो फाइनल रेजिस्टेंस R आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा. There are two ways of combination of resistors: series combination and parallel combination. Resistors in series. Current through each resistor is the same current entering the combination. Potential drop across the series combination is equal to the sum of the potential drops across the individual resistors. For any number of resistance in series, R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and Now resistor in series, the current through each resistor is same. तो यहाँ पे जो current I निकलेगा वो दोनों resistance में I remains the same. This is the first point. The potential drop across the series combination equal to the sum of the potential drop across the individual resistors. तो यहाँ पे अगर V1 drop हो रहा है तो this is the first resistor and this is the second resistor. This is the combination in series है, तो यहाँ का जो potential होगा that is V1 and V2, but V1 plus V2 is equal to the final potential difference that is V. For any number of resistance in series, अगर ऐसे और भी resistance series में लगे होते हैं तो the final resistance जो रहेगा that is R1 plus R2 plus R3 and so on. So on. The equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistances. The equivalent resistance is always larger than the largest resistance in the series combination. This has to be remember the equivalent resistance, जो भी आपका resistance final निकलेगा after the combination of two resistance R1 plus R2 and R3, इसके बाद जो निकलेगा the equivalent resistance is always larger than the larger resistance in the series. इन दो में या इन तीन के अंदर जो भी largest resistance रहेगा उससे जो final resistance आएगा वो आपका greater ही रहता है in the series combination. Let's start with the resistor in parallel. Resistors in parallel. Potential drop across each resistor is the same. Total current entering the combination equals the sum of currents through the individual resistors. For any number of resistance in parallel, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus. Now in the case of parallel, the potential drop across each resistor is same. Means यहाँ पर और यहाँ पर जो रहेगा potential remains the constant, वो same रहेगा V तीनों इन दोनों जगह V ही रहेगा. Total current entering the combination equal to the sum of the current through the individual resistor. Now in this case R1 के पास I1 जाएगा current and R2 के पास I2 current जाएगा, but
टोटल करंट जो रहेगा यहाँ पर फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब एंड करेगा, बाद में जो मिलेगा दैट इज आई निकलेगा, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल रहेगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V। फॉर एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं अक्रॉस ए और बी, तो उनका दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/RC and so on. Plus and so on. The reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. The equivalent resistance is always less than the smallest resistance in the combination. अब इनका जो फाइनल हमारा जो कैलकुलेट कर आया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 1/R1 आएगा, इट इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। इन जो हमारे कॉम्बिनेशन में सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस लगे हुए थे, उसका जो स्मॉलेस्ट होगा उससे भी कम हमारा रिजल्ट आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Example. Let's take an example on combination of resistors. Calculate the resistance between A and B of the resistance network shown in the given figure. Let's see the solution. For calculating resistance RAB between A and B, we make an equivalent network shown in figure. Now we calculate resistance of arm GEFH, which is equal to 1 plus 1 plus 1 within parenthesis is equal to 3 ohm. Now, according to the question, you have to calculate the resistance between A and B. यहाँ पे B here, C here and D. According to the question, you have to calculate the resistance between A and B. तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से चले, फिर यहाँ पे पैरेलल हो गया दो में, अगेन इधर नहीं जाएंगे बिकॉज हमें ए करंट से बी तक जाना है, तो पाथ क्या होगा, या तो ये पाथ होगा और या फिर ये पाथ होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इस पाथ का और फिर इस पाथ का। तो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस जी, ये वाला रेजिस्टेंस, दिस प्लस दिस, एंड यू कैन सी दैट दे आर इन series. So first you are calculating the resistance this, तो 1 ohms है इसमें, तो the resultant will be 3 ohms. This is in parallel with the resistance of arm GH. So the effective resistance between G and H is equal to 0.75 ohm. Now you can see that अभी जो हमने कैलकुलेट करा वो इसका रेजिस्टेंस निकाला, दैट इज 3 ohms आ गया। अब ये इसकी जगह हम दूसरा रेजिस्टेंस, इसकी जगह एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज 3 ohms विच इज इन द पैरेलल विद दिस। तो अब इसका और इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस का हम पैरेलल निकालें, विच इज कैलकुलेटेड 0.75। Now RAB is equal to 1 plus 0.75 plus 1 is equal to 2.75 ohm. Now, पहले हमने ये कैलकुलेट करा सीरीज के अंदर, इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया उसको हमने पैरेलल में इसके साथ कैलकुलेट करा, विच इज कम टू बी 0.75। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह हमने एक कॉमन रेजिस्टेंस लगा दिया, विच इज इन सीरीज विद दिस एंड दिस, दैट मीन्स 1 फॉर दिस 0.75 वो इस पूरे कॉम्बिनेशन का निकाला है हमने, वो आया है, एंड प्लस 1 ohm विच इज कम टू बी 0.275 ohms. Hence, the effective resistance between A and B is 2.75 ohm. The effective resistance between A to B is 2.7 ohm. इसका कोई यूज नहीं है तो इसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमारा पाथ क्या था, A to B। अगर A to D होता तो आप ये करते कैलकुलेट, इसको आप
नहीं करते। अगर A to D होता और अगर A to C होता तो आप इन दोनों को ओमिट कर देते, तो आपका पाथ ये होता। Clear? I'm giving you some practice question. Please try to solve these questions from ERP assignments. Thank you.